आज मौसम बहुत अच्छा है। सोचा कि बच्चे भी आए हुए हैं तो क्यों ना बाइक राइड पे चला जाए। तो मेटा मेटा की तरफ लेके चलते हैं आपको। आइए आपको बड़े सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाते हैं। हमारे लेफ्ट हैंड साइड माउंट टियारोहा और काईमाई रेंजेस, इनके साथ साथ हम लोग थोड़ा की रेल ट्रेल पे चल रहे हैं। Go, go, go! You just always been a tighter rush that I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yeah. I just need a little bit of patience. You need me, I know that you've been waiting. Down my number twice, promise I'll pick up the line. I see you worried, don't gotta ask why. You like it, I know that you like it. You like it, yeah, you like it. I know that you like it, you like it. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. It's a beautiful ride. The weather is great. राइट हैंड साइड साइलेज की बेल्स रखी हुई हैं, अभी फ्रेश कटी हैं। और ब्यूटीफुल फार्मलैंड से होते हुए हम लोग जा रहे हैं मेटा मेटा की तरफ। और यहाँ आ गया है एक क्रीक, तो ब्रिज को क्रॉस करते हैं। और अब काफ़ी ढलान है तो काफ़ी स्पीड से जो है बाइक्स जाएंगी। Like it, I know that you like it, you like it, yeah, you like it. I know that you like it, you like it. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around. यहाँ पे थोड़ा सा पैच कंक्रीटेड है क्योंकि काफ़ी यहाँ मिट्टी जो है पीट टाइप की है जो ज़्यादा बारिश में बह जाती है, तो इसलिए यहाँ पे सारा कंक्रीट कर दिया है। करीब मेरा ख्याल है 2 किलोमीटर के करीब कंक्रीटेड होगा ये। बहुत ही मज़ा आ रहा है। पीछे मोर बोल रहे हैं, चिड़िया चहचहा रही हैं। क्या नज़ारा है और कितना अच्छा लग रहा है बर्ड्स की चहचहाहट सुनकर। कितनी शांति मिल रही है। काईमाई रेंजेस कितनी सुंदर दिख रही हैं, थोड़े थोड़े बादल हैं।
Go and check out the barn, Tani. Did you find anything? Nah, nothing. कार आ रही है तानी? This is a pretty narrow bridge, so cars को पहले वे देंगे, थोड़ा इंतज़ार करेंगे, देखेंगे दोनों तरफ और फिर क्रॉस करेंगे, because it can be a bit dangerous. ग्रीन लाइन जो है ये साइकिल्स के लिए, और इधर ये वाईहाउ रिवर नीचे, इसमें हम कायाकिंग भी करते हैं बहुत बार, और जब भी बच्चे समर्स में आते हैं छुट्टियों में तो एक बार तो कम से कम कायाकिंग हो ही जाती है. Papa, you just gonna give the. Come on, guys. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can surrender to you. Beautiful crop of maize to my right. ईयर्स निकल आए हैं, कॉप्स निकल आए हैं, फ्लावरिंग हो रही है, थोड़े ही दिन में मक्का पकने वाली है. हमारे लेफ्ट में है द ओल्ड फोर्ज किचन, और ये लोग हमारे पार्टनर्स हैं होराकी रेल ट्रेल पे. काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है ये, ओवरलुकिंग द कायमाई रेंजेस. लेफ्ट में जो ये शीप दिख रही हैं ये मिल्किंग शीप्स हैं, और ये हमारे कस्टमर्स का ही एक शीप फार्म है मिल्किंग, इनका गोट फार्म भी है. अब हम जा रहे हैं अपने दोस्त फ्रांस और पेनी के गोट फार्म पे, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट गोट फार्मर्स हैं न्यूजीलैंड के. Electronic bikes. Yeah, Are they expensive? these are our hire bikes. We hire them. Do you? And these are my kids. They're back from uni, so this is Ashita and Shantanu. Hi, how are you? Good, thank This is you. Penny. Are they good? Oh, they're nice. You should try them someday. I will. I'll come in because I was thinking about buying one. Oh, okay. Buying an electronic. They're bike. cheap. These are cheap. I think I saw one in there for 5, 2, These are 3. 3. And we have been like, we can see how many thousands of kilometers we've done. This one is 1400 kilometers, and other that's 15. So you're going to hire them out? We have been hiring them since like last 2 years. Really? Yeah, just because of the COVID, we didn't get too much business. Yeah, it'll pick But, up now. yeah. Though. Yeah. Cool. I was like, who are these tourists? Random people. आइए अब आपको फ्रांस और पेनी का गोट फार्म दिखाते हैं. ये लोग
3000 गोट्स मिल्क करते हैं। भाग भाग भाग, शेर आया, शेर आया, भाग भाग भाग। ये फ्रांस का टेरियर है, बहुत ही शैतान है और क्यूट भी बहुत है। Come on man, come on. बहुत सारे शेड्स हैं और हर शेड में लगभग 800 से 1000 गोट्स रहती हैं और ये साल भर मिल्किंग करते हैं और इनका एलीट गोट जेनेटिक्स का भी काम है। ये लोग यूरोप और चाइना अपने किड्स को एक्सपोर्ट करते हैं। Oh yeah. How are you? Good, thanks. इधर सारा फार्म इक्विपमेंट, लोडर्स, ट्रैक्टर्स, फीडर्स और ये सामने जो शेड है ये बक्स का शेड है। आपको दिखाते हैं बक्स, कितनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है इनकी। ये देखिए कितने बड़े बड़े बक्स हैं, लंबी लंबी दाढ़ियाँ। These are bucks. एक और लोडर, साइलेज बेल्स। ये सामने जो है मिल्किंग शेड है, 100 बेल रोटरी। और इधर से कई और शेड्स। इधर साइलोज फीड के लिए और यहीं पे फीड मिल है और प्रेशर ग्राइंडर। इधर मिक्सर है, ये ग्राइंडर। उधर किड्स का शेड है, छोटे बच्चे जो बिल्कुल हैं उन्हें अलग अलग एज के हिसाब से रखा जाता है। इधर बड़ी गोट्स हैं। इधर स्टोरेज शेड जहाँ पे फर्टिलाइजर्स, फीड्स, मिनरल्स ये सब रखे जाते हैं। सामने वर्कर का घर है और ये वाले शेड्स में थोड़ी बड़ी किड्स हैं जो 5 से 6 महीने वाली। आइए देखते हैं अंदर। फ्रांस के पास 4 घोड़े हैं, काफ़ी अच्छा राइडर है ये और हमारे फीड्स लेता है। और ये हैं वो किड्स, अभी भी दूध पी रहे हैं। ये इनका फीडिंग सिस्टम है। और इधर फ्रांस के एक मेयर है। No, the kids go. You don't want to come in? Yeah? Look, that milking thing. It's an automatic feeder, milk feeder.
If you like the video, give a thumbs up. And it feels like summer. Feels like summer. And it feels like summer. Oh, there was something in your eyes that made me let go. Made me let go.